Sat Shri Akal. Good morning, friends. Winter set in, so I have new set of recipes to show you. First of all, I'm going to start with Khus Khus chicken. Chicken has the khuskhus flavor and masala. So we start with roasting some khuskhus, which looks like this. It is a very fine grain. It comes from the poppy seed. It's called the poppy seed rather, and it comes from the poppy. And this has a very different flavor. So we roast it a little and then we grind it to a paste along with cashew nuts. So काजू और खसखस का पेस्ट असी बना के रख लिया है. हुन असी मेन डिश तैयार करन लगे हैं. मैं गैस ਨੂੰ ऑन करांगी ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੀ. ਸੋ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸਸ 'ਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਸ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ थोड़ा जिहा गोल्डन कलर हो जाएगा, उन्होंने निकाल लेना. फिर असी अगे रेसिपी नूं बनाना है. सो ऑयल गरम हो जाएगा. We have approximately half a kg of chicken which is cut into pieces, and we are going to deep fry them. डीप फ्राई करने नाल एक तो शेप मेंटेन हो जाएगी बिकॉज द पीसेस कंजील हो जाते हैं और कलर भी आ जाएगा और कुकिंग भी हो जाएगी वो थोड़ी. इट दे विल बी ऑलमोस्ट हाफ कुकड. होर इंग्रेडिएंट्स जिहड़े चाहिए ने अदरक लसन प्याज मसाले ते दही. तेल गरम हो गया. हुण मैं दो तीन पीसेस करके पानी है जिससे तेल ठंडा ना हो जाए. चिकन दी प्रोटीन जिहड़ी है वो सेट हो जाती है और पीस नूं सील कर दिंदी है. सो पीस बाद च सुकड़दा नहीं है. इट्स मेंटेन्स इट्स शेप and the juices remain inside. That is the basic reason of putting it on high heat, either roasting it or frying it. हल्का हल्का ब्राउनिंग हो गई है. That's enough. We can take it out on an absorbent paper. Now I'll put another batch. So we've completed the first process. Now I'm going to remove the excess oil. And leave just enough for my onions to fry. We are going to lightly fry them because we are going to grind them later. So I'll add the ginger, chopped ginger, and the chopped garlic.
ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਖਸਖਸ ज़्यादातर ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ हैदराबादी नॉन वेजिटेरियन डिशेस च पैंदी है, but then it is a very nice dish, it's a very flavorful dish, so I decided that ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ cuisine ਦੇ ਵਿੱਚ introduce ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਆ। थोड़ा ठंडा करके पीसो so that you don't burn your hands. So the chicken is already fried. The onion, garlic and ginger which we had sauteed has been ground to paste, and alongside this we have the khuskhus and the cashew nut paste. So now I am going to heat up the kadhai once again and add the onion paste. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ स्वेट हो जाएंगे अनियंस। प्याज जो है ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਓ ਭੁੰਨਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ that the color is changing fast. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਹੋਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। चिकन तो चंगी तरह नाल लग गया है। हुण इहदे विच असीं खसखस पेस्ट पावांगे। इहनूं असीं भुन लेना है। सारा भुज के इकट्ठा हो गया। हुण इहदे च असीं हुण दही पा देंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ के रखना है मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट हो गए हैं, हल्की आग पे इसको रखा है हमने। खोला है, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है ते चिकन भी गल गया है। सो हुण इहनूं असीं बंद करांगे ते इनू सर्विंग डिश दे विच रखांगे।
ज़्यादा ग्रेवी नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਗਾੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Garnish with a little cream, not too much, and coriander leaves. Enjoy.